After traveling for around 300 kilometers from Pune, we have finally reached our resort, the Silver Sand Beach Resort, which is just opposite to the Devka Beach in Daman. After relaxing a bit at the hotel and completing with the lunch, now we are heading towards the Devka Beach. Now we are going to the St. Jerome's Fort. It is one of the oldest fort from the times of the Portuguese Empire in India. Constructed in the 1672 AD during the Portuguese Empire in India, this fortress is a must-visit while in Daman. This fort is named after the most prominent priest of the Catholic Church located inside the fort. Within the premises of the fort are a church, a school, and a small graveyard. The view of the sunset from the top of the fort is just splendid. It is now 6 in the evening and we are now heading towards the Moti Daman Fort and beach from St. Jerome's Fort. I must say, even after being a small union territory, Daman is one of the most beautiful and clean places of India. And I'm sure it is visible as we move around the place. This beautiful sunset view from the Moti Daman beach is certainly not something you can afford to miss while you're in Daman. So we have come to the Moti Daman beach, which is a black sand beach in Daman.
and everything has been beautified newly. Just walk with me to the place. Parasailing for the first time. बैठना नहीं, दोनों पर रन करना, बैठना नहीं, रन करो। कैसा लग रहा है? सर कैसा लग रहा है? हेलो नहीं, हिंदी बात कीजिए, हम लोग बंगाली नहीं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर? हाँ, बहुत अच्छा लगा, पिक तो मिलेंगे ना? मैडम इधर कैमरे में दिखिए, मैडम को फोटो लीजिए। सर आपको जब नीचे उतरेगा ना, दोनों को बैठना नहीं है। ओके, बैठ गए नहीं, इधर लग जाएगी। थोड़ा दौड़ना है ना? दौड़ना है, ये सब भी किया ना? या वैसे ही गिरने के, तो ऐसे करने के लिए। कितना दिन से कर रही है यहाँ पे? मेरे को 5-6 महीने हो गए। आपको बैठना नहीं मैडम? हाँ। बैठना नहीं है, थोड़ा रनिंग करना सर। सर थोड़ा रनिंग करना आपको सर। हाँ, रनिंग करना। खड़े जाओ। सर कैसा लगा? और अच्छा। It was a really thrilling experience, parasailing for the first time. It was about 70 to 80 feet above, and it was really amazing. কত বছর ধরে এখানে আছো? এই তো এক বছর হয়ে গেছে। এক বছর আগে ওই মন্দারমণি দীঘাতে ছিল? হ্যাঁ, মন্দারমণি এখনো ছিল, আছে আমার। মন্দারমণি, দীঘা, তাজপুর, বকখালি। So that was a short weekend trip to Daman. I hope you liked our video. Please support us by liking, sharing and subscribing to our YouTube channel.